All right, so let us begin. Okay. So first of all, I request all of you to switch on your cameras so we can see each other and the session becomes more interactive, for whoever it is possible. Okay, let me also introduce Dr. Aditya Aundhakar to all of you. So first of all, thank you, Doctor, for agreeing to do this webinar for us. Dr. Aditya Aundhakar is a neurologist trained at Jaslok Hospital, Mumbai, with a 2-year clinical and research fellowship in cognitive neurology from the University of Calgary, Canada. He has a deep interest and experience in neuroscience with a focus on understanding how the brain works and translating this knowledge into practical strategies to improve memory and cognitive health. His clinical and consulting work emphasizes holistic dementia care, including structured approaches to caregiver support and management of behavioral and psychological symptoms of dementia, which is also called BPSD. And he's the founder of Mammoth Memory Care, a personalized dementia support program at Sion. So welcome, Doctor. Thank you. And we are looking forward to this webinar very, very dearly. Yes, thank you for that kind introduction. Thank you to you, Mrs. Nainauk, and Mr. Prasad Bide and the Aaji Care team for inviting me for this talk. As we discussed, I like it to be as interactive as possible. So if people have generic questions that they want to ask, and not personalized, because personalized questions become kind of consult later on. So if there are generic questions about anything, I'm happy to take those as the presentation proceeds. So before I start, do you think the screen is okay? Are there any black patches or is everything? There are a few black patches again on the top. I think, yeah. Now, is it a little better? Now it's better, yes. Yes, perfect. So before proceeding, I want to give a little bit of a background. So I trained at Jaslok as you described, and I spent 2 years in Calgary, Canada, learning more about how to early diagnose and better manage the whole family situation dealing with dementia. So dementia is not just something which affects the person with lived experience, but it also affects everyone around them. So the presentation that I've put up, it's titled The Top 10 Brain Health Mistakes. And the bias that I'll be talking about is from the perspective of a dementia related landscape. So I'm not a geriatrician. I don't deal with other systems related to old age, but largely with the brain and dementia. So I'm happy to take questions as we proceed through the presentation. So the biggest myth that I want to start off by addressing is what is the difference between dementia and normal aging? And I'm going to give you some examples. So I had a family, a doctor family in South Bombay, who came to me that their mother were having complaints of hallucinations. उनको भास हो रहा था, थोड़ा agitated थे, गुस्सा कर रहे थे. She was resistant to eating, changing, bathing, and that was happening since 2 to 4 months. And they called me कि डॉक्टर क्या दवा देना है अभी ये स्टेज में. So जब मैं हिस्ट्री ले रहा था, I was going into the background. I noticed that the decline was since 8 years. So मैंने उनको बोला, they were doctors, that ये Alzheimer's disease जैसा profile लग रहा है मुझे, and we have missed the boat a little bit by 8-9 years, and I think these are the medications that we should give. But they were very resistant to the diagnosis of Alzheimer's disease, and they were like, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं डॉक्टर? It can be just normal aging. So then I told them the example of my friend who is Aaji, stays in Sholapur, and she is 102 years old and she is independent. She goes to the local grocery shop, chai lena hai, like rice kharidna hai. She does all of that on her own, comes back, can do everything independently, and yet she forgets few people's names, and that's normal. So then I gave them that example that normal aging is also possible, but things like dementia, which I'll explain in the next few slides, is also something that is common as you age. So the most common factor here is age. According to Western literature, after the age of 65, 1 in 8
can have an Alzheimer's type of dementia. After the age of 85, 1 in 4 can have changes of dementia. And after the age of 100, 1 in 2 can have the syndrome of dementia. So what I'm saying is, yes, as you age, the risk factor that you may have dementia increases, but it is not inevitable. ऐसा नहीं है कि whoever ages उनको dementia होना ही है. That is a myth. That can still be prevented. Another factor to share here is, as you age above the age of 85, if you look at the women to men ratio, women have two-third risk. So they have a slightly higher risk of having dementia than men. सो पहले समझ लेते हैं व्हाट इज नॉर्मल. सो ये आप छोटा सा क्लिप में देख सकते हैं दैट दिस यंग लेडी शी हैज मेड नाइस डिलीशियस सांबार. सो a simple act like cooking is not actually that simple. आपको पता होना चाहिए कि क्या इंग्रेडिएंट्स आप यूज करने वाले हो, वो इंग्रेडिएंट्स आपके किचन में कहाँ पे रखे हुए हैं, कौन से ऑर्डर में वो डालना है. आप फीडबैक लोगे तो उसमें कम ज़्यादा है तो वो करेक्ट कैसे करें. आपको पता होना चाहिए कि किसको तीखा ज़्यादा चाहिए, किसको मीठा चाहिए, किसको कितना क्वांटिटी देना है. आपके बहुत सारे मोटर स्किल्स काम में आते हैं. आपको फाइनली चॉप करना रहता है, स्प्रेड करना रहता है. सो अ सिंपल टास्क लाइक इवन कुकिंग is not as simple as we think it is. It is quite a complex task. She can do it because she has a normal brain. तो समझ लेते हैं व्हाट इज अ नॉर्मल ब्रेन. तो आप इधर पे देख सकते हैं ये जो फोल्ड्स है ब्रेन में, वो फोल्ड्स आर कॉल्ड एज जायराए. एंड दिस जायराए आर वेयर द कंप्यूटिंग पावर ऑफ द ब्रेन लाइज. तो आप ब्रेन को एक मोटा मोटा एक एनालॉजी में कंप्यूटर जैसे समझ सकते हैं. जो इनकमिंग डेटा है आपके आंख से, आपके कान से, आपके नोज से, टंग से, टच से, all the data that's coming in is getting processed in the computer of your brain, and the brain is giving an output. मोटा मोटा आप वो आउटपुट सोच सकते हैं कि दे आर योर थॉट्स, योर इमोशंस एंड योर एक्शंस. नाउ सपोज देर इज अ न्यूरो डिजेनरेटिव प्रोसेस. बड़ा शब्द यूज किया मैंने, बट एक ऐसी बीमारी है जहाँ पे ब्रेन थोड़ा थोड़ा श्रिंक हो रहा है या ब्रेन के सेल्स कोलैप्स हो रहे हैं. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ न्यूरो डिजेनरेटिव प्रोसेस. तो आप देख सकते हैं कि सपोज देर इज अ वल्नरेबल ब्रेन, जहाँ ये साइड पे मैं दिखा रहा हूँ, जहाँ पे उसके कंप्यूटिंग पावर कम हो गई, प्रोसेसिंग पावर कम हो गई. आप इसके कंपैरिजन में देख सकते हैं कि इसका वॉल्यूम थोड़ा छोटा हो गया है और बीच की जो वैलीज है, क्रेप्ट्स है, वो बढ़ गए हैं. एंड ओवरऑल साइज आप कंपेयर किए तो ये बड़ा साइज है, ये थोड़ा छोटा साइज है. आप कलर में भी डिफरेंस देख सकते हैं कि दिस इज वेरी वाइट एंड स्मूथ एंड दिस इज लिटिल येलोइश एंड स्टेन्ड काइंड ऑफ ब्रेन. तो ये जो चेंजेस आप ब्रेन के ग्रॉस साइज में देख रहे हो, that is called little bit of the disease process is called as Alzheimer's disease. तो मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ? For you to understand that let's take thoughts, आपके ability to learn something new, ability to remember new things, ability to plan sequence, ability to navigate in familiar and new areas, ability to understand social situations. All these things can be normal, and if there is a vulnerable disease going on, they are not going to be normal. तो उसमें चेंजेस आ जाएंगे. A vulnerable brain will not be able to cope with all the data that is coming in. The same can apply with emotions. आप यदि उदास हो जाते हो तो आप वो उदासपन को कोप कर सकते हो. यू कैन ट्राई एंड टॉक योर सेल्फ आउट ऑफ इट. यू कैन गो टू अ डॉक्टर, टेक मेडिकेशंस. आप एंग्शियस हो जाते हो तो आप एंग्जाइटी को कंट्रोल कर सकते हैं. आप इम्पल्सिव बिहेवियर्स आए, आपको लगा मैं किसी को मारना चाहता हूँ, आप खुद को काबू लगा सकते हैं कि नहीं, दैट इज सोशली इनअप्रोप्रिएट, नहीं करना चाहिए, जाने दो. यू कैन फॉरगिव देम. वेयर एज इफ यू लुक एट दिस वल्नरेबल ब्रेन, उनके ब्रेक्स थोड़ा फेड हो जाते हैं. गुस्सा ज्यादा करते हैं, तुरंत शांत भी हो सकते हैं, थोड़े इम्पल्सिव हो सकते हैं, स्टबर्न हो सकते हैं, ज़्यादा सैड हो सकते हैं, एंग्शियस हो सकते हैं, कभी कभी हेलुसिनेशंस हो सकते हैं, कभी भास होता है, कभी सस्पिशियसनेस या पैरानोया बोलते हैं. भूल जाते हैं कि मैंने वॉलेट कहाँ रखा, फिर ब्रेन खुद को समझा लेता है कि वो जो मेड आ रही है वो मेरी वॉलेट चुरा रही है. तो संशय आ जाता है, शक आ जाता है. All that happens because the brain is vulnerable and is not able to process the right amount of information in terms of your emotions. And the last thing that can get impaired is movements. अभी ये जो नॉर्मल ब्रेन है
कैन बैलेंस योरसेल्फ वेरी वेल, सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ते हुए एकदम नॉर्मल बैलेंस रख सकती है, अंधेरे में बराबर से चल सकती है। वेराज ये जो वल्नरेबल ब्रेन है उसमें मूवमेंट्स की कमतरता आ सकती है, बैलेंस प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, there are a lot of things which can actually go wrong. So, what I wanted to highlight in this presentation, in this slide, was the difference between a normal brain and an abnormal brain. तो जब आप किसी को देखेंगे कि they have become slow in their thoughts, they are forgetting more, not able to plan much, इमोशनल कंट्रोल चला जा रहा है, बैलेंस के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, गिर रहे हैं, तो यू शुड अंडरस्टैंड दैट उनकी पर्सनैलिटी जो चेंज हो रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ पॉसिबली अ डिसीज प्रोसेस इन देयर ब्रेन। ये I wanted to highlight. So let's discuss what is the cognitive spectrum. अभी dementia जो चीज है वो तो लास्ट स्टेजेस है। वी ऑल स्टार्ट समवेयर हियर वेयर वी आर ऑल नॉर्मल। तो कभी कभी वी कैन हैव सब्जेक्टिव सिम्टम्स की मेमोरी लैप्सेस हो रहे हैं विच आर प्रोग्रेसिंग, थिंकिंग प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या मूड बिहेवियरल चैलेंजेस आ रहे हैं। सो इफ यू गो टू द डॉक्टर एंड द डॉक्टर डज सम स्टैंडर्डाइज टेस्ट, अभी ये एग्जाम्पल में मैंने एक मोका टेस्ट दिखाया है वेर वी डू स्टैंडर्ड पजल सॉल्व करते हैं, शेप्स ड्रॉ करने बोलते हैं, क्लॉक ड्राइंग वगैरह जैसे टेस्ट होते हैं। सो ये जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट में आपके जो स्कोर्स है, यदि आपके स्कोर्स नॉर्मल आते हैं इन कंपैरिजन टू योर एज मैच्ड पियर्स, मतलब सपोज यू आर 60 ईयर ओल्ड लेडी और आप डॉक्टर के पास गए और आपके टेस्टिंग स्कोर्स आपके 60 ईयर ओल्ड लेडीज जेंडर के लिए बराबर है, तो देन वी कॉल इट सब्जेक्टिव कॉग्निटिव डिक्लाइन। वी यूज द वर्ड हियर डिक्लाइन। और यदि ये चेंजेस बढ़ जाते हैं और आपके स्कोर्स आपके एज और जेंडर के मैच्ड पर्सपेक्टिव में कम आते हैं, देन वी यूज द टर्म माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ क्लॉक ड्राइंग के। वी कैन सी दैट इफ सपोज आई आस्क समवन टू शो टाइम 2:30, 2:30 के टाइम दिखाओ, तो नॉर्मल पर्सन कैन शो कि एक छोटा काटा है, बड़ा काटा है, एंड दे कैन रिफ्लेक्ट द टाइम वेरी वेल। बट अर्ली स्टेजेस में व्हेन द ब्रेन इज नॉट वर्किंग वेल, ब्रेन का प्रोसेसिंग पावर कम हो रहा है, यू कैन सी दैट थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज कंफ्यूज हो रहे हैं, बड़ा काटा छोटा काटा नहीं बता पा रहे, 2 बज के तो टाइम दिखा है बट ये गलत हैंड दिखा है। सो दिस कैन बी अर्ली स्टेजेस ऑफ dementia which can be assessed on cognitive testing। एंड इन एडवांस स्टेजेस आप देख सकते हैं कि पूरा कॉन्सेप्ट ही चला गया है। मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि आपके पास हार्ट के लिए ब्लड टेस्ट है, किडनी के लिए ब्लड टेस्ट है, लीवर के लिए ब्लड टेस्ट है, आपके पास ब्रेन के लिए कौन सा ब्लड टेस्ट है जो दिखा सकता है कि ब्रेन में चेंजेस बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे? देर इज नो ब्लड टेस्ट। सो दी ओनली वे टू ट्रैक ऑब्जेक्टिवली कि ब्रेन का फंक्शन कैसा है, ब्रेन का आउटपुट कैसा है, इज टू डू दिस स्टैंडर्डाइज न्यूरोसाइक टेस्टिंग। एंड इफ यू रिपीट द सेम टेस्ट, सपोज आपने 2026 में एक टेस्ट किया और आपका क्लॉक ड्राइंग का सपोज ये स्टेटस था, 2027 2028 में सपोज ये स्टेटस है, सो वी कैन ऑब्जेक्टिवली शो that there are changes in your own brain health compared to your own past psychometric analysis. So that is the importance of doing this test if you have symptoms or if you know of someone who is having symptoms. So the question is, what is the word dementia? मैंने dementia काफी बार ये presentation में use किया. So let me explain what actually is dementia. So if I say that the heart's job is to pump blood, the liver's job is to metabolize, the kidney's job is to excrete, पेशाब बनाने का काम है. So what is the brain's job? In my opinion, in a very simple explanation, it is the brain's job is to keep you independent. Now you look at children. If you have had children or if you know of kids, what is the parent's goal? The parent's goal is to make that child who is dependent on them independent, so they can be socially well regulated and they can live their own life independent of the parents. Now suppose at the other end of the spectrum an adult who was if that person is no longer able to maintain their independence, that transition is called as dementia. तो dementia नाम term जब मैं use कर रहा हूँ, I'm implying that as a transition phenomenon from a state of independence to dependence. Now the question is, what is the most common cause of dementia? So the most common cause of dementia largely is Alzheimer's disease pathology.
तो अल्जाइमर्स डिसीज पैथोलॉजी स्टार्टिंग में भी हो सकता है, सब्जेक्टिव कॉग्निटिव डिक्लाइन बढ़ के माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट में भी प्रेजेंट कर सकता है, एंड इट कैन प्रोग्रेस ऑन टू बिकम dementia also. So Alzheimer's disease is the largest cause which drives the syndrome of dementia. Other causes are vascular disease या छोटे छोटे स्ट्रोक या बड़े स्ट्रोक्स, rare diseases like dementia with Lewy body है, frontotemporal dementia है. You can forget all those technical terms, but the bottom line is a change in function is what you're supposed to assess in a family member. So now coming to the main topic of interest. In my practice, what is it that I've seen that I want to share with people? So when I was in Calgary in Canada, मेरे ओपीडी प्रैक्टिस में उधर सपोज मैंने 10 पेशेंट देखे, तो 10 में से 9 लोग माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के स्टेज में आते थे, इन दिस स्टेज. वेराज अभी मैं जब इंडिया आया हूँ लास्ट अगस्त, अभी तक 1 ईयर के प्रैक्टिस में out of 10 patients, 9 patients are presenting in the dementia stage and not in the early stage. So why is that? In my opinion, our families in India are missing early signs. And why does that happen? In my opinion, Western countries में parents don't generally stay with their children. They tend to stay independently. So उधर पे loss of ability to maintain day-to-day activities presents earlier. So they go to the doctor much sooner. Sometimes, or largely in the Indian population, there are family members or staff who work with them जो compensate करते हैं for all the changing functions that may happen as you age. And that's why people miss the mild cognitive impairment stage pretty much early on. So what are the few things that I want to highlight that you should watch out for if you have someone who might be going through these changes? So the first is new learning difficulty. Matlab, suppose you know of a person who is very open to learning, is very social and likes to do something new. If they are saying कि नहीं 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 मुझे नहीं करना है, या they are struggling to use the new set top box का टीवी रिमोट, कि टीवी रिमोट नया तो सेट टॉप बॉक्स ला लिए लिए बट टीवी रिमोट यूज करना नहीं जम रहा है, या नया मोबाइल फोन गिफ्ट कर दिया एंड दे आर नॉट एबल टू यूज द डिफरेंट फंक्शंस ऑन दैट मोबाइल फोन. व्हेन यू सी सच थिंग्स वेयर बिफोर से 5-10 years ago they could have learned something new, and now they're struggling to use a new device or learn a new language or learn any new activity, that should be a little bit of a worrisome thing that you should go and see the doctor that कभी रिपीटेटिव भी हो रहा है, दे आर नॉट एबल टू रिमेम्बर कि किसकी शादी अटेंड किए थे, क्या कर रहे थे. सो दैट न्यू लर्निंग चैलेंज इज समथिंग टू बी टेकन सीरियसली. The second point I noticed is social withdrawal. So many people come to the clinic saying कि हाँ 5-6 साल पहले से थोड़ा सोशली विड्रॉ हो रहे, लार्जली सोशल थे बट अभी धीरे धीरे इंटरेस्ट चला गया है, और दे डोंट वांट टू गो एंड मीट रिलेटिव्स, डोंट वांट टू गो आउट एंड मीट फ्रेंड्स. So that is also a very early sign that the brain is becoming vulnerable. तो इसका साइंस क्या है? Why does this happen? So if you think in a conversation, the brain is having a proper workout. मतलब आपको सामने वाले पर्सन की बॉडी लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, क्या बता रहा है वो समझ में आना चाहिए, क्या बताया 10 मिनट पहले और आगे क्या बताने वाला है, ये सब प्लानिंग प्रोग्रेसिंग वो ब्रेन में डेवलप, इट इज प्रोसेसिंग ऑल दैट इंफॉर्मेशन. सो when the brain is becoming vulnerable, if there's a disease process going on, so that vulnerable brain will not be able to process so much information कि ये सामने वाला क्या बोल रहा है, 10 मिनट पहले क्या बोला था, उसका नाम क्या है, उसके भतीजे के नाम क्या है, कौन सा कॉन्टेक्स्ट में कॉन्वर्सेशन चल रहा है. सो अ नेचुरल बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस डिसीज प्रोसेस इज दे बिकम सोशली विड्रॉन. तो आपको यदि लग रहा है कि आपके पेरेंट या स्पाउस इज बिकमिंग सोशली विड्रॉन, then that is a time when you should definitely go and visit the doctor to know more. थर्ड थिंग इज लो कॉन्फिडेंस. बहुत बार मैंने देखा है कि अब पर्सनालिटी वॉज आउट गोइंग, अ पेट्रियार्क और मेट्रियार्क ऑफ द फैमिली, अभी धीरे धीरे डिसीजन मेकिंग में कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है. सो दैट इज ऑल्सो अनदर साइन वेयर चिल्ड्रन टेल मी कि पापा तो सब डिसीजंस लेते थे और अभी नहीं ले रहे, बता रहे कि आप ले लो, मुझे मत बताओ, आप सब मैनेज कर लो. एंड sometimes kids may not be ready to take on that responsibility, but that transition where confidence down ho raha hai, that is also an early sign that there is possibly a disease process driving that change. One of the most important things जो मेरे कनाडा में सीखी, जो इंडिया में लोग अवेयर नहीं है, is that mood changes can come even before memory loss. So
इफ यू आर अबाउट द एज ऑफ 50 years और आपको कभी पहले साइकेट्रिक सिम्टम्स नहीं थे, आप कभी उदास नहीं थे, डिप्रेशन के सिम्टम्स नहीं थे, कभी टेंशन नहीं लेते थे, एंजाइटी नहीं था, इम्पल्सिव नहीं थे, स्टबर्न नहीं थे, आपको कभी हेलुसिनेशंस नहीं थे, शक नहीं था, पैरानोया नहीं था, बट इनमें से कोई भी साइकेट्रिक सिम्टम्स यदि आपको आफ्टर द एज ऑफ 50 हो रहे और 6 महीने के लिए ये रह रहे, सो दैट इज अ न्यू टर्म कॉल्ड माइल्ड बिहेवियरल इम्पेयरमेंट, जो इज अ वेरी बिग प्रेडिक्टर कि आगे जाके 5 साल में डिमेंशिया हो सकती है. सो इफ यू नोटिस एनी काइंड ऑफ मूड चेंजेस in your loved one, then that is also a warning sign that you should go to the doctor as soon as possible. And one of the other things that I've seen is change in interest. कि पहले they used to enjoy cooking and now they are like नहीं चाहिए, आप मेड रखो, मुझे अभी कुकिंग नहीं करना है. या a person used to love reading the newspaper in the morning is now like मुझे कुछ नहीं करना है, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है. So all these changes can also be a sign that the brain is not able to generate interest in doing the activities that it previously enjoyed doing. और ऐसे बदलाव आ रहे हैं तो भी you should see your doctor as soon as possible. So in one word, if I have to summarize these 5 changes, it would be a change in baseline personality. The person that you have known for say 50, 60 years, if they are changing in their personality for whatever reason, that is a warning sign and you should go and see your doctor. The second thing I think families that I see in my clinic miss out on is the children, especially, or the spouse, needs to learn to be patient. I'll let that sink. If you're a child and you have seen your parent, I want you to understand that your brain is different from your parent's brain. Or if there's a spouse and the spouse has a relatively normal brain and the other person is having a vulnerable brain, both are not processing the same information at the same speed. ये जो टेबल मैंने नीचे दिखाया है, सो दिस इज, आपने कभी इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे ये वीडियोस देखे रहेंगे दैट पीपल आस्क यू टू सी कि हाउ लॉन्ग यू कैन स्टैंड ऑन वन लेग एट अ टाइम. सो ये काइंड ऑफ स्टैंडर्डाइज डेटा है कि एज यू एज your ability to stand on one leg is reducing. So suppose you're in the bracket of 60 to 70, you should be able to stand for about 30 seconds on one leg. If you're not, it can be a sign that you need to do more physiotherapy or keep yourself engaged. ये मैंने क्यों इधर ऐड किया है? Just to tell you that it is normal that as you age, your reflexes become slow, your thinking can become slow, your speech can become slow, and as a caregiver or as a family relative, you should acknowledge your partner's or your parents' slowness of thoughts and be patient with them. बहुत सारे झगड़े जो फैमिली में होते हैं इसलिए होते हैं कि सवाल तो पूछ लिए बट जवाब आने के लिए टाइम लगता है एंड देन पीपल गेट एंग्री. अरे छोड़ो, ये करो, जल्दी शर्ट पहनो, जल्दी पैंट पहनो, जल्दी चलो, अपॉइंटमेंट मिस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. सो दैट does not provide dignity in aging, and we as young people fail to understand what a senior citizen might be going through because we are biased with our normal brain to begin with. So I want to stress that you should always be patient when you're dealing with someone who is in the older age group. ये साइड में जो मैंने एक फोटो डाला है, I want you to see all these little white spots in the brain. तो ये जो व्हाइट स्पॉट्स आ रहे हैं उसको व्हाइट मैटर हाइपर इंटेंसिटी बोलते हैं. इट्स अ टेक्निकल टर्म बट दे शो लिटिल बिट ऑफ स्कारिंग इन द ब्रेन. तो एज योर एज प्रोग्रेसेस, सपोज आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर के रिस्क फैक्टर्स है, कोलेस्ट्रॉल है, ओबेसिटी है, तो ये छोटे छोटे व्हाइट स्पॉट्स जो है ब्रेन में ये बढ़ते जा सकते हैं. सो एज यू सी फजेकास ग्रेड 2, ग्रेड 3 की इधर बहुत ही ज्यादा व्हाइट पैचेस बढ़ चुके हैं. ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ? Because the brain is continuously talking amongst different areas. So suppose this part of the brain is talking with this part of the brain. तो इसके जो connections है, if there is some scar tissue in between, तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा for this part of the brain to connect with this part of the brain. जो एकदम फास्ट होना चाहिए वो थोड़ा स्लो हो सकता है. So you should understand that if you are seeing your parent has become a little slow, one factor that might be making them slow is there might be actual physical changes in the brain. So you should go and show a doctor if the change is a little too much. The third point to highlight is to keep them engaged.
नाउ सपोज यू थिंक ऑफ द ब्रेन एज अ गार्डन। तो ब्रेन एक गार्डन है। गार्डन को थ्राइव करने के लिए क्या चाहिए? गार्डन रिक्वायर्स गुड वाटर सप्लाई। तो आपके ब्लड वेसल्स जो ब्रेन को सप्लाई कर रहे हैं वो ब्लड वेसल्स रोबस्ट होने चाहिए। तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी कंट्रोल करना चाहिए। एंड अ गार्डन शुड हैव वेरी गुड सनशाइन टू स्टे वाइब्रेंट। तो सनशाइन मतलब क्या? एनी काइंड ऑफ कॉग्निटिव स्टिमुलेशन। तो जितना ज्यादा सेंसरी स्टिमुलेशन आप ब्रेन को देते हो, उतना द ब्रेन्स एनवायरनमेंट इज एनरिच्ड. So the biggest problem that I see in my practice is retirement. So retirement के बाद there's a big void that can be filled both for men and women. So they can have a lot of high functioning jobs. The moment they get retired, suddenly there's a big void. वो social exposure जो होता था ऑफिस में वो कम होता है. जो activities were demanding on the brain वो कम हो जाते हैं. And then मोस्ट पीपल स्टार्ट नरेटिंग सिम्टम्स कि अभी 2 साल से रिटायर हो गए और धीरे धीरे उनकी मेमोरी और थिंकिंग में चेंजेस आ रहे हैं. सो द वे आई वांट पीपल टू प्रिएम्प्टिवली प्रिवेंट इट इज टू मेक कंटेंजेंसी प्लान्स कि आप रिटायर हो रहे हो तो आगे जाके क्या करने वाले हो. इफ यू हैव बिकम अ मैनेजर एट अ सर्टेन पोजीशन तो आप कंसल्टेंसी ज्वाइन करो या कुछ आपका विजडम जो है वो यंग पीपल के साथ शेयर करो, मेंटरिंग करो. If you want to write a autobiography, do that. So what I want to say is you always should keep yourself cognitively engaged. Let me give you an example here. So when I was in Calgary, there was a 70-year-old man who came, who was of Indian origin. He was paying income tax in three countries, US, Canada, and India. He was in the oil business. He came to our clinic क्योंकि उनके ब्रेन में there were a huge amount of tiny bleeding. तो उन्होंने पूरा एक एमआरआई स्क्रीनिंग किया था और स्क्रीनिंग में उनको देखा कि देर आर ब्लीडिंग स्पॉट्स इन द ब्रेन. इसलिए उन्होंने क्लिनिक के पास ही वॉज रेफर्ड. उनको सिम्टम्स कुछ भी नहीं था, बट he had active lesions in the brain. So you can see how well his cognitive reserve was. कि in spite of so many bleeding spots in the brain, उनको cognitive symptoms वैसे ज्यादा थे नहीं. Why am I telling you this story? He was continuously listening to new podcasts. He was learning Persian language at that time. He used to always keep himself cognitively engaged. He used to not drink, no smoking. And at the age of 70 also, he was doing push-ups and pull-ups among at a good time of the week, he would do even 100 push-ups and pull-ups. So always keep yourself engaged. Age is not a limit to learn something new or to do some exercise. But it also ties into something very important, and that is a sense of life purpose. So this is new science. आप ये शायद सुने नहीं रहेंगे, बट मैं अभी जो बताने वाला हूँ, this is something new in science. तो ये जो मैं दिखा रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड एज एन एमेलॉइड प्लाक. जो अल्जाइमर्स डिसीज होता है, आप जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हो ब्रेन में, तो यू विल सी दिस रस्ट लाइक पैचेस, उसको बोलते हैं एमेलॉइड प्लाक. और ये जो आप रेड कलर के स्टेन्स देख रहे हो, दोज आर न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स, या टाउ एक प्रोटीन रहती है जो मिसफोल्ड करके न्यूरॉन्स को चोक करके कोलैप्स करवाती है. ये एक नॉर्मल न्यूरॉन हो गया, ये एक चोक्ड न्यूरॉन हो गया. तो अल्जाइमर्स डिसीज में ये दो बदलाव दिखते हैं. तो शिकागो में पेट्रिशिया बॉयल करके एक रिसर्चर है जिन्होंने ये स्टडी किया, और उन्होंने देखा कि जिनके ब्रेन में अल्जाइमर्स के लक्षण थे आफ्टर डेथ, उनमें उन्होंने दो ग्रुप्स किए. वन ग्रुप जिनको एंटीमॉर्टम मतलब लिविंग स्टेटस में डेमेंशिया का डायग्नोसिस था, और दूसरा ग्रुप जिनमें ये अल्जाइमर्स के बदलाव थे लेकिन लिविंग सिचुएशन में उनको अल्जाइमर्स या डिमेंशिया की डायग्नोसिस नहीं थी. तो उन्होंने क्या रिसर्च किया कि जिनको अल्जाइमर्स का डायग्नोसिस लिविंग स्टेटस में था और नहीं था, उन दोनों के ग्रुप्स में व्हाट वाज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर. एंड देयर वाज वन वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर दैट स्टूड आउट, एंड दैट वाज अ सेंस ऑफ लाइफ पर्पस. तो जिन लोग में अल्जाइमर्स की बीमारी ब्रेन में थी बट इन अ लिविंग सिचुएशन सिम्टम्स नहीं थे, दे हैड अ वेरी हाई सेंस ऑफ लाइफ पर्पस. मतलब दे वुड बी very good at volunteering at the church. They would go out and do something new. They were socially very engaged and they were very active people. उनको always हमेशा था कि next क्या करना है. दिन जब खुलता है तब क्या क्या एक्टिविटीज नए कर रहे हैं, कहाँ घूमने जाना है, कहाँ क्या करना है. That kind of a sense of life purpose बहुत ज़्यादा था. So what I'm trying to say is the difference between having dementia and being normal, even though you are having pathology in the brain, can be your sense of life purpose. अभी मैं मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस का प्रैक्टिकल फ्रस्ट्रेशन बताता हूँ.
The frustration is largely for men if they have not developed any hobbies during their working years. रिटायरमेंट के बाद उनको यदि सलाह दूं कि आप कुछ तो नया प्रोजेक्ट सीखो या हॉबीज बनाओ या कुछ तो नया करो, तो दे लाइक नहीं, बस हो गया, मैंने बहुत जिंदगी काम कर ली, अभी मेरे को रिटायर करना है, अभी मेरे को रिलैक्स करना है, मेरे को कुछ नया चीज नहीं करना है. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इनिशिएट समथिंग न्यू if you have not had that temperament to begin with. But one way to overcome this in my clinical practice is if you give them a sense of life purpose और बोलते हो कि देखो आप तो इतने साल ये पोजीशन में काम किया अपने के कंपनी में, या आपने इतने सारे कंपनीज में काम करके आपका इतना सारा विजडम है, आप क्यों नहीं आपके थॉट्स पेन डाउन करो, एक ऑटोबायोग्राफी लिखो, या डू समथिंग विच इज मीनिंगफुल फॉर यू. बिकॉज यू कैनॉट टेल समवन हु डजंट वांट टू डू सुडोको कि आप सुडोको खेलो या आप पेंटिंग करो या आप जिक्सॉ पजल्स करो. नहीं इंटरेस्ट है तो नहीं है, क्या कर सकते हैं. सो अंडरस्टैंडिंग व्हाट माइट ड्राइव देम टू लर्न समथिंग न्यू इज योर ओन होमवर्क. नाउ डॉक्टर कैनॉट गिव यू जेनरिक आंसर, बट आप आपके लव्ड वंस के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट ड्राइव्स देम एंड ट्राई टू हेल्प देम अचीव दैट. सो दिस इज माय फेवरेट टॉपिक, dealing with repetition. बहुत सारे बार in my clinic, the most common thing that drives agitation या aggression in the syndrome of dementia is a person becomes repetitive. Same question बार बार पूछते हैं, अपन कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आपने क्या किया, मुझे खाना मिला क्या, नहीं मिला क्या. And up till a certain threshold, the caregiver can tolerate those repetitive questions. But after a certain time, we are all humans. अपना पारा चढ़ जाता है और आप गुस्से में बोलते हैं, अरे आप भी तो बताया, कितने बार बताओगे, कितने बार पूछोगे. एंड देन दैट काइंड ऑफ anger outburst can drive agitation and aggression. So people get angry. तो मैं ये क्या दिखा रहा हूँ, दिस लिटिल गर्ल, शी वॉज बॉर्न विदाउट अ ब्रेन, पैदाशी दिमाग था नहीं, बट उसके चेहरे पे हंसी, डर, फियर, एंगर, थर्स्ट, ये सब इमोशंस उसके चेहरे पे दिखते हैं और वो बता सकते हैं कि मुझे प्यास लगी है, भूख लगी है. तो अपने इमोशनल सेंटर्स कैन बी वेरी मच लोअर डाउन. तो मैं ये समझाना चाहता हूँ दैट इन अ वल्नरेबल ब्रेन, व्हेन लॉजिक इज नो लॉन्गर वर्किंग, लॉजिक कमजोर होती जा रही है, आपके जो इमोशनल एंगल है वो प्रिटी मच इंटैक्ट रहते हैं. इमोशनली यू कैन फील योर वे अराउंड कि सामने वाला पर्सन मेरे साथ क्या बर्ताव कर रहा है, लाइक हाउ आर दे बिहेविंग विथ मी. ये जजमेंट बहुत सारे टाइम में डेमेंशिया में एंड स्टेजेस तक रहते हैं. सो व्हेन अ पर्सन इज बीइंग रेपिटेटिव, द वे टू डील विथ इट इज हाँ को हाँ मिलाना है, और जो सवाल पूछ रहे उसका इमोशनल एंगल सोचो कि बार बार ये प्रश्न क्यों पूछ रहे. सपोज द एग्जाम्पल इज रेपिटेटिव की अपॉइंटमेंट है, अपन कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो आप बताते हो डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर के पास जाना है. द वे टू अंडरस्टैंड इज दे माइट बी इमोशनली वल्नरेबल, कि उनको पता है कि डॉक्टर के पास जाना है. इमोशनली दे नो कि मुझे क्लिनिक नहीं जाना है, शायद वो मेरा ब्लड चेक करेंगे या शायद मेरा ब्लड प्रेशर चेक करेंगे जो मुझे दर्द करेगा, या मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है. ये वो लॉजिकली बता नहीं पा रहे शायद, बट इमोशनली बार बार पूछ रहे हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं. सो इन सच सिचुएशन आपको उनको इमोशनली रीअश्योर करना है, चिंता मत करो, हम एक नॉर्मल हेल्थ चेकअप के लिए जा रहे हैं. And the more you reassure them consistently by understanding what might be their emotional worry, that way they will be less repetitive. And that is something that can be individualized for that repetitive question. But this is something that we should all try and use in these situations at home. The next thing is addressing pain. Now, as young people, we may not understand what pain senior citizens might be going through. The pains can be largely joint related pains, can be teeth related pain, can be headache related pain, and sometimes you are able to pinpoint and sometimes you are not. अभी 2 दिन पहले मैं मेरे डॉटर के साथ थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड हो रहा था, एंड आई वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाई, बट आई हैड डेवलप्ड अ लिटिल बिट ऑफ अ लो बैक पेन, और मेरा पेन थ्रेशोल्ड, पेन की वजह से मेरा एंगर थ्रेशोल्ड कम हुआ था, एंड आई वाज स्नैपिंग एट माय डॉटर when she was being a little stubborn. So then I reflected on my own situation that when I took paracetamol, मेरा पेन चला गया, मेरा मूड ठीक हो गया, मैंने डॉक्टर पे चिल्लाना कम कर दिया. So what I'm trying to say is pain can be a very important driver for agitation, frustration and aggression.
समटाइम्स इन द सिंड्रोम ऑफ डेमेंशिया ऑल्सो। मेरे पास कितने सारे पेशेंट थे, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। देयर वाज अ लेडी हु वाज हैविंग एडवांस स्टेजेस ऑफ डेमेंशिया, जो बात नहीं कर पा रही थी। और रिलेटिव आया, बोले कि डॉक्टर साहब वो बहुत गुस्सा कर रही है, वो शावर से निकल रही है विदाउट वेयरिंग क्लोथ्स, वो कुछ भी बड़बड़ कर रही है, आप उनका साइकेट्रिक मेडिकेशन का डोज बढ़ाओ। वो क्लिनिक में आए थे एंड मैंने नोटिस किया कि वो बार बार अपना घुटना रब कर रही थी। सो आई रियलाइज कि उनको शायद नी पेन है, जो किसी ने एड्रेस नहीं किया। 3 दिन के लिए उसको पैरासीटामोल 2 बार खिलाया दिन में, एजिटेशन एपिसोड्स अपने आप कम हो गए, एंटीसाइकेट्रिक दवा बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दैट मेनी टाइम्स यदि मूड चेंजेस हो रहे हैं तो वन डिफरेंशियल फैक्टर कैन बी पेन। मैं और एक किस्सा सुनाता हूँ, ये कनाडा की स्टोरी है। वन ऑफ द फर्स्ट एग्जांपल्स ऑफ लॉन्ग टर्म केयर व्हेन आई वाज वर्किंग। एक लेडी जो कभी एजिटेटेड नहीं थी, सडनली एजिटेटेड होना चालू हो गई और वो खाना खाना बंद कर दिया। तो हमको कॉल दिए गए कि डॉक्टर आके देखो कि कुछ दवा और बढ़ानी है, कम करनी है। एंड इन आर हेड टू टू एग्जामिनेशन हमने देखा कि उनके मुंह में छाले पड़े हुए हैं। सो शी वाज हैविंग लॉट ऑफ मैफ्थस अल्सर्स। तो हमने उसको जाइटिका जेल दिए, हमने विटामिन के सप्लीमेंट्स दिए, और एक 2-3 हफ्ते में अपने आप डेंटिस्ट को भी बुलाए थे। उसका डेंटिशन ठीक करने के बाद, मुंह के छाले निकलने के बाद, उसने खाना भी चालू किया और साइकेट्रिक दवा चढ़ाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। सो एड्रेसिंग पेन is very important thing. Always ask for pain, constipation, or any change in medications if there is a behavior and personality change. Now, another important concept to understand is अपना जो मेमोरी रिकॉर्डर है ब्रेन का। सो दिस एरिया जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एज द हिपोकैम्पस। दैट इज द मेमोरी रिकॉर्डिंग एरिया ऑफ द ब्रेन। आप देख सकते हैं कि इसके अराउंड बहुत थिन ब्लैक कलर का लाइन है। सो दैट इज नॉर्मल, वो फ्लूइड एरिया है अराउंड द हिपोकैम्पस। जब हिपोकैम्पस श्रिंक होता है, आप देख सकते हैं कि उसका फ्लूइड पैकेट कितना बढ़ चुका है और हिपोकैम्पस एकदम श्रिंक हो चुका है। हिपोकैम्पस जो है मेमोरी रिकॉर्डर, वो क्या करता है, आपके दिन में ना, फॉर एग्जाम्पल इन दिस टॉक में जो भी रेलेवेंट पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, वो पॉइंट्स को टैग्स लग रहे हैं। और ये टैग्स आप जब रात को सोओगे तब वो टैग्स पुल आउट हो जाएंगे और शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होने वाली है। सो दिस रिकॉर्डर इज कन्वर्टिंग शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी एट नाइट व्हेन यू आर स्लीपिंग। सो अल्जाइमर जैसी बीमारी में जब हिपोकैम्पस छोटी हो जाती है या एट्रोफी हो जाती है, नए मेमोरीज नहीं बनते। तो 10 कल क्या किए, या 10 मिनट पहले क्या किए, या किसका रिसेंट शादी था या इवेंट था, वो सब भूल जाएंगे। बट 10 साल, 20 साल, 30 साल पहले जो भी लॉन्ग टर्म मेमोरीज है वो इंटैक्ट रहेंगे। तो वो बराबर बताएंगे कि अरे अपन वेकेशन के लिए इधर गए थे, या अरे ये तो चिंटू का ये 2 बच्चे हैं। सो लॉन्ग टर्म मेमोरीज कैन बी इंटैक्ट, बट रीसेंट मेमोरीज और शॉर्ट टर्म मेमोरीज स्टार्ट गेटिंग अफेक्टेड। So the biggest problem that I see is when dementia progresses, reverse order में memory चली जाती है. So they will forget grandchildren first, then children, then siblings, then mother and father. So I'll give you real examples from last week. A mother gets very agitated. Family comes to me कि डॉक्टर मम्मी गुस्सा कर रही है, रो रही है, बहुत रो रही है। एंड आई आस्क कि व्हाट इज द सिचुएशन, क्यों रो रही है? तो उनको मम्मी की याद आ रही है। द लेडी इज 90 year old. शी इज रिमेम्बरिंग हर मदर यूज टू लिव इन अमृतसर। सो शी इज लाइक मुझे अमृतसर जाना है। और ये बच्चे लोग उनको समझा रहे कि मम्मी जी, आपकी मम्मा गुजर गई है, आप अमृतसर में नहीं रहते, ये आपका घर है, आप मुंबई में रहते हो, एटसेट्रा। तो उनको मैंने एक ही सलाह दी, वैलिडेट एंड डिस्ट्रैक्ट। यू वैलिडेट हर सिम्टम्स और टेल हर दैट ठीक है, आपको मम्मी को मिलना है, आपको अमृतसर जाना है, ठीक है, आप आपका बैग पैक कीजिए, हम शाम को ट्रेन से जाएंगे। वाई ट्रेन? बिकॉज दैट टाइम द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वॉज ट्रेन। Only with this simple fact of validation and distraction, मम्मी जी started calming down. और एक हफ्ते में मुझे डॉटर इन लॉ ने वीडियो भेजा ऑफ मम्मा स्माइलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन मंथ्स एंड प्लेइंग सम गेम्स विथ हर. Why did this change happen? Because the daughter-in-law and the son, they started validating the mother's viewpoint कि मेरी मम्मी is alive and I want to go meet her at Amritsar and my kids are going to help me go there. So she gets confused कि kids का नाम क्या है, वो कौन है. But when they started validating and distracting, the agitation, the sadness, the crying calmed down. So when new learning is difficult, नया memories नहीं बन पा रहे, don't try and correct someone in that stage by telling them what is right. If they think today is Sunday,
टुडे संडे, इफ दे थिंक मैं आज खाना नहीं खाया, ओके खाना नहीं खाया, उनको लग रहा है कि मेरा ब्रेकफास्ट मिस हुआ है इन स्पाइट ऑफ ईटिंग, ठीक है, यू हैव मिस्ड इट, थोड़ा और एक स्मॉल सर्विंग दे दीजिए, नो हार्म इन दैट. सो ऑलवेज वैलिडेट एंड डिस्ट्रैक्ट. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिस्पेक्टिंग एपिटाइट एंड स्लीप. बहुत बार, अभी कंपेयर टू कनाडा इन इंडिया, मेरा डिफरेंस इन ऑब्जर्वेशन इज, कनाडा में लॉन्ग टर्म केयर में एज द पर्सन स्लीप इंक्रीज दे वुड अलाउ दैट पर्सन टू स्लीप एज लॉन्ग एज दे वांट. दे वुड नॉट फोर्स देम टू ईट एनीथिंग. तो उनको सपोज अभी पोरिज का बड़ा सर्विंग का सिर्फ आधा चाहिए तो आधा खिलाएंगे, आधा छोड़ देंगे. So that was the culture there, and I used to wonder why they are not forcing them to eat. They are losing muscle weight, they're losing weight, they're sleeping longer, उठा के खिलाओ, but they never did that. Then I realized when I came back to India, one of the major causes of agitation or frustration in the Indian families was our love language is food. So I have so many families. I'll give you an example. A family in Vadala. There, दी मदर को उठा के फोर्स फीड करके मुझे वीडियो भेजे कि देखो खाना नहीं खा रही है और चिड़चिड़ कर रही है. तो मैंने उनको बोला, अरे डोंट मेक हर अप, लेट हर स्लीप लॉन्गर, डोंट फोर्स फीड हर. एंड इमीडिएटली थिंग्स चेंज्ड and they sent me a thank you message that whatever time she's awake, she's more engaged and she's eating happily and she's eating whatever she thinks is required. तो आप इधर देख सकते हो कि द वार्म कलर्स और द रेड कलर्स, जो हॉट कलर्स है, दैट इज टेलिंग यू दैट द ब्रेन इज टेकिंग अप ग्लूकोज वेरी वेल. ग्लूकोज इज अ मॉलिक्यूल दैट यू टेक टू लिव, द सेल्स टू सर्वाइव. तो नॉर्मल एजिंग में आप देख सकते हैं कि बहुत सारा रेड है, दैट इज नॉर्मल. अल्जाइमर्स में आप देख सकते हैं कि ये सब ब्लू कलर्स हो गए, कि ये वीक हो गए, कि इधर पे ज्यादा ग्लूकोज का अपटेक नहीं हो रहा है. तो आप सोचो, आपका ब्रेन जो 20% एनर्जी ग्लूकोज से लेता है बॉडी में, आप इधर एनर्जी नहीं यूज कर रहा है, तो ऑब्वियसली बॉडी भी साथ देगी. ब्रेन इज कंट्रोलिंग द बॉडी, सो एपिटाइट नेचुरली स्टार्ट्स गोइंग डाउन. सो डोंट फोर्स फीड and let them sleep as much as they want. Don't wake them up to give them their dawa or to give them their medicines. Obviously, talk to your doctor and consult them before doing this. But this is a very firm advice to prevent any kind of agitation or aggression in this kind of people. Now, very important but less talked about point is financial hygiene. So I'll share two extreme examples. So one example, again, South Bombay family came to me. The problem was that senior citizen was scammed to the tune of 2 crore rupees. It didn't happen in one go. एक साल से टप्पे 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 में he has lost 2 crore rupees from his savings. The daughter filed an FIR, came to me saying that, look, my father is not cooperating with the police because he doesn't believe that it's a scam or that he has fallen prey to this scam. So it took me time to, assess his status, help him understand, gain insight, and now he's cooperating with the police. But the point is, sometimes in a vulnerable brain, they may not have insight into their issues. कि क्या हो रहा है, मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ वो सही है कि गलत है, लोग मुझे स्कैम कर रहे नहीं कर रहे, बिकॉज these are sensitive things. So the bottom line is, if you are a child or if you are a spouse, it is best as you age to make someone accountable for your finances, to make sure that if there are any scams happening, then they are nipped in the bud and that you address these concerns preemptively rather than losing money first. So that is something I wanted to raise. Another example I'll share is a neurologist herself. Her father was going through end stages of dementia and I was helping them go through palliative care. मैंने उनको बोला कि अभी ये स्टेज में, as I said, कि let them sleep longer or eat lesser, and I was helping them transition to palliative care and eventual death. They were not ready for it because she said, doctor, my father was in the construction business, or इनका business में we have not been added as the partners, or if he dies, we don't know what will happen with the business which has a significant turnover and other things. So then it struck me that had they met me earlier, when the person had capacity or when they were earlier stages of eventual cognitive decline, I could have helped them plan in advance how to finish all the legal things so that towards the end stages of this illness there are no problems to deal with. मतलब nominees add करना या जो भी financial things है, to be ready to work with a lawyer, living will बनाना हो या planning for end of care things, which Canada taught me. Canada में once you had a diagnosis, power of attorney label करना,
पर्सनल डायरेक्टिव लेबल करना, ऑल दिस थिंग्स वेर legalized, drafted, जो इंडिया में एक्चुअली नहीं है. But I want to raise this awareness that if you know someone who might be declining, better start planning for the financial hygiene from now onwards. Now, the last slide. If there is one take-home message that I learned from my fellowship in Canada, the most impactful intervention to prevent any kind of neurodegenerative process, मैं वापस बोलता हूँ, सबसे इम्पैक्टफुल इंटरवेंशन जो भी है, जो एक दवा नहीं है, टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ बीमारी फॉर द ब्रेन लाइक अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, इवन स्ट्रोक्स, इज एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज. जो भी बेनिफिट एक्सरसाइज से मिलते हैं, वो बेनिफिट्स कोई भी दवा में पैकेज करके फार्मास्यूटिकल्स आपको नहीं दे सकते हैं. तो आप दवा खा के बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज नहीं, उसका लाभ नहीं उठा पाओगे. आपको एक्सरसाइज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है. आई अंडरस्टैंड दैट एज यू एज जॉइंट पेन्स होते हैं, अदर कार्डियक इश्यूज होते हैं, बहुत सारे अदर चैलेंजेस रहते हैं. बट इन स्पाइट ऑफ दैट, आप जो भी सिटिंग योगा हो, चेयर योगा हो, स्विमिंग एक्सरसाइजेस हो विच आर इजी फॉर द जॉइंट, और हार्ट रिलेटेड हो तो आप फिजियोथेरेपिस्ट के साथ जितना भी छोटा मोटा एक्सरसाइज, इवन वॉकिंग, वॉकिंग भी करो. जो सपोज यू आर नॉट वॉकिंग मच, आज दिन में 10 मिनट वॉक किए, दैट इज इम्प्रूवमेंट. एनी मूवमेंट इज बेटर देन नो मूवमेंट, एंड द बेनिफिट्स ऑफ मूवमेंट कैनॉट बी मेजर्ड ऑब्जेक्टिवली, बट इट्स द मोस्ट इम्पैक्टफुल इंटरवेंशन. तो आज के टॉपिक में ये पॉइंट आप जरूर याद रखना, द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज. एंड लास्ट बोनस टिप, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करो, डायबिटीज कंट्रोल करो, हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल करो, एंड इफ देर इज ओबेसिटी एंड यूर इन योर 50s 60s, reducing your weight by lifestyle and diet is going to have a very good protective impact on your brain health. So again, coming back to the analogy, if your brain is a vibrant garden, उनका वाटर सप्लाई मतलब ब्लड सप्लाई अच्छा होना जरूरी है. ब्लड सप्लाई ठीक रखने के लिए कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रखो, शुगर डिपेंडिंग ऑन एज टारगेट्स कैन बी 7 से नीचे HbA1c या 6.5 के नीचे HbA1c, और ब्लड प्रेशर टारगेट आइडियली आज का नया लिटरेचर बताता है शुड बी लेस देन 120/80, इफ नॉट एटलीस्ट अराउंड 130 के आसपास तो टॉप फिगर आपका रहना चाहिए. सो विद दैट, आई वांट टू थैंक यू फॉर योर अटेंशन, and I look forward to answering all questions that you have so far. Thank you so much, Doctor. It was a really, really good session. I am opening the panel for questions now. So you all can raise your hands and we'll take each question. अगर आप किसी को माइक्स में इश्यूज है तो आप लोग चैट बॉक्स में भी आपके क्वेश्चंस लिख सकते हैं. Someone has written diabetes will be 200, 220 after 1 hour is okay. Later it drops. हाँ, तो शुगर लेवल्स, यस, आपको आइडियली HbA1c देखना है. HbA1c क्या होता है मैं समझाता हूँ. आपके ब्लड में देर आर रेड ब्लड सेल्स और RBC बोलते हैं. तो रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन रहते हैं 3 महीना ब्लड में. तो जो भी शुगर कम ज्यादा हो रहा है, जो डायनामिक रहता है, अभी शुगर 200 हो सकता है, थोड़ा टाइम बाद 120 हो सकता है, थोड़ा टाइम बाद 90 हो सकता है. सो शुगर्स कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग, बट ये जो भी फ्लक्चुएशंस है वो रेड ब्लड सेल्स के अराउंड चिपक जाते हैं, और वो जो मॉलिक्यूल बनता है उसका नाम है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, जिसको बोलते हैं HbA1c. तो वो जो मार्कर है, दैट इज अ बेटर मार्कर टू टेल यू कि आपके शुगर्स कंट्रोल में है कि नहीं है. सो टू रादर आंसर अ क्वेश्चन वेयर 200 या 220 एक घंटे के बाद है, इज दैट ओके और नॉट, आई वुड प्रेफर आपका HbA1c लेवल्स आप बता सकते हैं, तो आई कैन गिव अ बेटर आंसर कि वेदर दैट लेवल, वेदर इट इज लेस देन 6.5, more than 6.5, more than 7.5, more than 8. That gives me more information than just a one-time sugar level of 200. But anything above 180 is not good for long term because it is damaging the brain. Good morning, doctor. I asked this. My name is Sarvesh Soman. I asked this question. Yeah. My sugar levels typically after lunch
After breakfast and dinner, both are 2:30, 2:40. 1 hour. Yeah. 1 hour after eating food. But later it drops, and my HB1AC, as per recent reports, of course, I'm diabetic. I take tablets both times, day, night. Yeah. It's about 5.5, 6. So it's not, uh, yeah, That that's is a good one. fantastic. Yeah, Fantastic. Proud of you. Keep it up. So 5.6 gives me better information. So with correct, that, I'm correct. very reassured that the 200 doesn't matter. So that means you're still, your body is coping up with all the medications and you're doing a good job. Yeah. Thank you. Thank you. Yeah. Keep it up. There was another person named Ritu who had raised her hand. Ritu, would you like to ask your question? Yeah. My both the parents are dementia. Dad is still better than mother. So I have a concern about my mother. Yeah. She complains of severe itching. She recently had a fall. She broke her hip. She got operated. Everything is going fine. She's walking also. Yeah. But she's been complaining of as it goes in the evening, she starts complaining that I am itching. I had Mm. taken her to dermatologist, and obviously they know that she's got dementia. So they gave her some application, some creams and all that stuff, which we applied 3 days. But obviously with dementia, she keeps forgetting. I do have a 24-hour caretaker, Yeah. but can we do something about the sleep thing? Because I mean, we are not planning to give her we've not given any medicine for that so far. Correct. So in this syndrome of dementia that you have described in your mom, yes, we can try certain medications which are actually very safe and well studied in the dementia setting. The names I'll discuss right now, one is melatonin and the other is We're lemborexant. already giving melatonin. The other is lemborexant. So lemborexant is Okay. number one. The Okay. trade name is Dayvigo. So depending on a lot more clinical parameters in terms of what is the stage, what's the MRI findings, what's the other comorbidities that we are dealing with, we can have a better understanding of how to optimize our current medications. In terms of itching, my experience has been sometimes the tactile sensations, the processing that's going on in the brain, if Okay. that's the part which is affected, you can have people who complain of chronic itch. And an extreme example will be where they complain that there are some ants crawling on their skin, or they, that they feel that there is in a particular spot, there is some insects coming out and they get paranoid that, that's why I want to itch, itch, itch. No matter how much lotions the dermatologist gives, that just doesn't go. That can sometimes resolve with some types of low antipsychotic medications like quetiapine in my experience. So I Okay. need much more information than just 2 minute sentence to help you formulate a plan on what could possibly be optimal. She's she's been advised with Belastin in the morning. So we Yeah. do give her Belastin in the morning. In the night, it is melatonin. And then Zonflex is also told, but I gave her half, 2.5. So that time she was very sleepy. So then we again consulted the doctor. She's an army officer's wife. So we are consulting geriatric department. So all that is going on. But this itching thing, and there is no rash, there's nothing. Yeah, Um, we've seen that happen multiple times before. So a low dose of quetiapine might actually help. So I'll okay. have to opine there later on in a personal consult if you want. Yeah. Okay. I'll do that, Dr. Aditya. Thank you. Okay. Yeah. Thank Pleasure. you. Yeah. Okay, we can take a little more generic questions rather than personalized questions, as you had mentioned, Doctor. So there Yeah. are a few questions over here wherein Mrs. Dorothy wants to ask whether menopausal women low on hormones can take omega-3 vitamins to help brain health. Yeah. And she basically wants to understand whether that's a correct move. Yes, so omega-3 supplementation has been shown in studies to help improve cognition and maybe reduce the rate of decline if there is dementia which has already set in. My concern with omega-3 is quality control, because it is a very sensitive molecule. If you are exposing it to light and if it is not stored well, the contents degrade inside the capsule and they may not last well unless you shelf it properly. And also, the industry is not well regulated in the supplement sector. So what kind of omega-3 you are taking, whether it's actually benefiting or whether it's a placebo effect, is something that I am skeptical about. But otherwise, given the studies, 100% yes. Whether you're menopausal or not menopausal, omega-3 is definitely a good supplement to take for brain health. Yes. And I would prefer researching your brand and then using the best ones available. Yeah.
Okay. We will take just a couple of questions more since we are running out of time. So there's another question. She wants to know, is it part of dementia for the patient's brain to lose the ability to recognize signals for urination and passing bowels? Or could it be Yes, something else? yes. That's a very important question. So the, as I mentioned, abstractly, the brain's job is to keep you independent. When you're independent, you can maintain all your basic activities like feeding, hygiene, grooming, etc. In the syndrome of dementia, when the brain is shrinking and the connections are no longer correct, it is not able to keep you independent. And that leads your, as the disease progresses towards the end stages, you start losing your ability to maintain continence for urine, for stool, and towards the extreme end, your ability to feed and swallow, and then you'll start hearing a gurgling sound, and sometimes they'll choke on their food while swallowing as well. So patients with dementia don't die from brain problems. They'll die from aspiration pneumonia or lung infection because they're not able to swallow, from urine infections because they've become incontinent and are wearing diapers, and sometimes the stool gets mixed with the urine and there are urine infections which spread to the blood, becomes fulminant, or they have bed sores because they're no longer able to ambulate and the bed sore gets infected and they can succumb. So dementia itself does not lead to death, but because you're no longer able to be independent and regulate your hygiene, that leads to problems and difficulties. So to come back to the main question, yes, as the disease progresses, urine control and stool control can get affected. So, Yeah. so that means we need not go for UTI, right, doctor? Every Yes. time like she goes to the urinate, so it Yeah. might be due to dementia also. Yes. It can be because of dementia. And often they are not able to regulate the sensation कि कितना फील हो रहा है ब्लैडर, कितने बार बार जाना है. सो मोस्ट फैमिलीज विल कंप्लेन कि हर 10 मिनट में बोलते हैं मुझे जाना है, मुझे Yes. जाना है, मुझे जाना है. And that is a syndrome or a symptom of dementia. There are certain medications which you can do to enlarge the bladder. मेरा बैकग्राउंड करके नाम आता है. सो उसमें क्या होता है कि थोड़ा स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द ब्लैडर बढ़ जाती है. And in that situation, it might relieve the symptoms a little bit. So you can try that medication after discussing. Can you give me this method in writing, like in the And message? that will have to be through a proper channel. I cannot do this. Okay. But the allopathy doctor always says that इस उम्र में UTI हो जाता है, इस उम्र में Correct. UTI. Yes. तो मैंने explain किया कि क्यों होता है. Why that is Okay. something that happens. Okay, doctor. Thank you. Welcome. Hi, doctor. I had a question. Hi. Yeah. So my father suffered a sudden cardiac arrest, and since then he's facing symptoms similar to dementia. So it was an HIE. Wanted to understand. Good that you highlighted something about a living will. So Yes. just wanted to know more on that. How is it possible for to go about that? Yes. First of all, I wish him get well soon. For those who may not have understood what is HI is, हार्ट अटैक के बाद रक्त पुरवठा ब्रेन को कम होती है, तो ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई ना मिलने से थोड़ा ब्रेन में डैमेजेस होते हैं. That was HI. What is living will is if a person has capacity to think, then they can, in the witness of two people, preferably if one is lawyer, it is not a must. But if there are two people who witness the person and they have capacity to write about how they want their future life to be in terms of healthcare. For example, मुझे वेंटिलेटर पे नहीं रखना है, मुझे हॉस्पिटलाइज वापस मत करो. All these health related things they can write in a living will. It will not cover financial decisions or property distribution. That will not be covered under the living will as per the latest Supreme Court judgment. But healthcare related decisions is something that they can write at this stage if they have the capacity to think, witnessed by two people, preferably a lawyer. Got it, doctor. That does help partially.
That does. Because he's like But a baby, he does answer, like you rightly mentioned, anything about his childhood days or previous, he does remember. Anything that is recent, he forgets. Even his birthday celebration, he forgets. That's yeah, there. I don't think that then in this capacity he would be able to write a living will at now, for now. Yeah. Got it. Okay, doctor. So, not sure if I'm asking a lot. So, who would be the right person to guide here? A lawyer in that case? Yes, a lawyer would definitely help plan estate management or property distribution from a legal standpoint. Yes, I definitely encourage that. Power of attorney, maybe if that's possible. Okay. Yes, yes, Sure, we'll explore, doctor. Thank you so much. pleasure. Doctor, I too have a question, if I may ask. Yes. I've put it on the chat also. So, in your practice, have you ever encountered a case where, the dementia symptoms got reversed? Of course, I understand it's a progressive disease, but Yeah, due to, if it is detected early, due to cognitive exercises and, I mean, whatever examples you mentioned, or, those yeah, 19 points that you mentioned, if after realizing that it is dementia and, we need to emphasize on it, yeah, we are doing it. And it has to some extent, partially 10%, 20%, 30%, yeah, reversed. That was one question. And second, so I'm talking about my father who has early mild symptoms. And because my mother, his wife, who is also old, more than yeah, 70, is a primary caregiver herself, is, has maybe a cardiac kind of a thing along with that. How right. to take care of her? Because you also mentioned that two-thirds of women are more prone Yes, to dementia, and because of whatever, psychologically also, obviously a spouse will not feel good to see her husband in such a situation. So correct. how do you also proactively take care of her brain health? Two Yeah, questions. Yeah. yes, perfect. So thank you for that. Let me start with the first question. If you catch a syndrome in the mild cognitive impairment stage, then there is much more options of lifestyle changes and cognitive rehabilitation, which can almost plateau the whole process for more than a decade or more. So what I'm trying to say is, if it's very early stages, then yes, we can plateau it for a long time. Amongst the causes of dementia, if it's a vascular disease or if the changes in the personality are because of tiny strokes which are coming on or some old bigger strokes which had, then that syndrome we can actually put brakes on by maintaining good blood pressure, good sugar levels, good cholesterol, blood thinners. So in that way, the prognosis is a little much better than say Alzheimer's disease. So there Yeah, are here it's Alzheimer. yeah. So in that earlier if you intervene, the better then the outcomes can get. Another point I'll cover in that from my experience is the topic of lucid intervals. What I mean by that is your brain has different neural networks in the way it is processing information. As the disease is ravaging the brain, your neural networks may get compromised. So the output will change, and there might be lucid intervals for say for some families it can be few minutes, few hours, few days, where for that 1 hour, 2 hours they're very much there. They're the old selves, they talk coherently, they remember everything, they're all online, they're normal. And then they say, doctor, Mhm. संध्याकाळी 5 वाजता व्यवस्थित असतात, काय झालं? Hmm. So these kind of lucid intervals can be explained by your neural networks being online for some times of the day. Suppose you have woken up from a nap, or you're well optimized food wise, drinks wise, water intake wise, etc. So that's the lucid intervals which can be stretched on by maintaining their lifestyle and brain health. That's the answer to question number one. To question number two, what can we do for your mom, is understanding the psychosocial dynamics between mom and dad are going to be very important, because what I see in practice is they are codependent on each other. So if one starts declining, then the sensory deprivation for the other person starts increasing. For example, if dad is struggling to keep himself socially interactive, talk about new things with mom, or is Hmm. withdrawn and is not allowing other friends to come over to have a chat with him, that overall impact which dad is having on the family is also going to affect your mom.
Right. So then having structured interventions where she can get respite care for herself, where she goes out and meets her friends, or she stays engaged in some 1 hour activities with a psychologist coming home, or maybe she going to a center and engaging herself. Those kind of activities which will keep her brain stimulated with exposure to new people, new learning, maybe some art, some music, some dance, some whatever is suitable for her, mitigating her vascular risk factors which led to a heart attack to begin with. What caused the heart attack? Was it just age? Was it something else? The blood pressure, the diabetes, the cholesterol? Addressing all that preemptively will give her a better fighting chance to potentially prevent or delay the onset of any future cognitive decline. Does that Okay. make sense? Yeah, of course, it does make sense. Yeah. Thank you so much. The session was really brilliant. I mean, it's a Pleasure. lot of insights. Yeah. Yeah. Thank you. I have some patients outside now. Yes, I'll have to, so no more questions now yeah. from our side. Yeah. But once again, on behalf of everyone and Aaji Care also, I'd like to thank you, sir, for Pleasure. having this wonderful session for all of us. Yes, thank you for inviting me. And I'm Dr. Aditya, yes. Hi. I must say, hi. One of the most brilliant session I have attended. Fabulous job. Thank you so much. I think Thank it has been very helpful. Yes. Thank you, sir. Thank you for the kind feedback. Yeah. I'll talk to you. Bye. And for everyone else, we are going to make this recording available on YouTube, so you can listen to it anytime. Just go to Aaji Care's YouTube channel and it will be available there. Right? Thank you so much, everyone. Thank you. Thank you, Have a doctor. nice Thank you, weekend. doctor, so much. Thank you, doctor. Thank you so much, doctor. Bye.